Good morning, ma'am. My topic is variables. A variable name indicates that its value can be changed. An example, we can see that int data is equals to 50. Here, data is variable. There are three types of variables in Java. Ronak, there are three types of variables in Java: local variable, instance variable, and static variable. Ronak, change. So first, Better you should say next rather than saying Ronak change. Better you say next. yes, ma'am. Local variables, a variable which is declared inside the body of the method or method parameter is called as local variables. तो local variable किसी method के body के अंदर या किसी method के parameter में जिस variable को हम pass करते हैं उसे हम local variables कहते हैं. तो examples में हम देख सकते हैं कि first इसमें जो int x है वो local variable है जो किसी मेथड की बॉडी के अंदर है. और सेकेंड इसमें आप देख सकते हो कि उसमें जो पैरामीटर के अंदर इंट ए देख सकते हो तुम, तो उसमें वो भी एक लोकल वेरिएबल कह सकते हैं. सेकेंड इज इंस्टेंस वेरिएबल, a variable which is declared inside the class but outside of all the method called instance variable. इंस्टेंस वेरिएबल में क्लास के अंदर लिखते हैं, लेकिन जितने भी क्लास में मेथड्स है उन मेथड्स के बाहर. आई रिपीट, क्लास के अंदर लिखते हैं लेकिन जितने भी क्लास में मेथड्स है उन मेथड्स के बाहर. ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि क्लास ए है और इंट ए हमने क्लास के अंदर लिखा है लेकिन वो मेथड के बाहर है. ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल, अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड with the help of static keyword called static variable. Example, static int x. Static variable हम कहीं भी declare कर सकते हैं और it is having single memory as compared to local variables and instance variables. इसमें अलग अलग memory होती है, जैसे function या class का object हो उस हिसाब से इसमें memory होती है. Next, Ronak, next. Declaration of variable. The first way to declare a variable, this specifies its data type and reserve memory for it. It assigns 0 to primitive type and null to object. So data type, variable name, हम इसमें int a, float c, float a, char b, हम इसमें अलग अलग ले सकते हैं. हम इसमें साथ में भी ले सकते हैं. To declare two variables all of the same data type, reserve memory for it. जैसे इसमें डेटा टाइप वेरिएबल नेम 1 एंड वेरिएबल नेम 2, तो हम इसमें अलग अलग भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं इंट abcd और float efg. The second way to declare a variable, those specifies its data types, reserves memory for it and puts an initial value into that memory. The initial value must be of the correct data type. So data type variable name equals to initial value. Example, int a equals to 5. Next slide. Next. Ronak, next. Rules of variable. It should be start with a lowercase letter such as ID name. Variable name can be of any length. It should be not be a keyword. So space is not allowed. It should not starts with the special characters such as ampersand, dollar, underscores, etc. Thank you. Yes, Bhargavi. Good morning, all of you. My name is Bhargavi Vadhare and my topic is data types. Data type is an attribute of data which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data. तो अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है कंप्यूटर में तो हमें उसको एक टाइप देना पड़ेगा, उसको एक साइज डिक्लेयर करना स्टोर करने के लिए. A data type should be assigned to each variable
और हर एक वेरिएबल को हमें डेटा टाइप देना ही होता है, तभी वो जाके प्रोग्राम होता है। It decides the size and type of data to be stored. Basically, जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट, प्रिमिटिव में और दो टाइप्स के होते हैं, एक न्यूमेरिक होता है और एक नॉन न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में आता है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, और नॉन न्यूमेरिक में आता है कैरेक्टर और बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में आता है स्ट्रिंग्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इंटरफेस। नेक्स्ट, प्रिमिटिव टाइप में आता है इंटीजर टाइप। इंटीजर is the capability of as well as negative whole number. This data type has four subtypes: byte, short, int. Java does not support unsigned type. तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स हम स्टोर करते हैं, और उसके चार टाइप्स होते हैं: बाइट, शॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग। और मोस्ट कॉमनली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम आईएनटी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल int age इक्वल्स टू 2। सेकंड इज फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग में भी दो होते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट में फ्लोट हम तब यूज करते हैं जब हमें स्मॉलर नंबर स्टोर करना है, और डबल हम तब यूज करते हैं जब हमें बड़ा डिजिट नंबर स्टोर करना है। और फ्लोटिंग में हम डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करते हैं। थर्ड है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप में वेरिएबल्स, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। नेक्स्ट, it is used to declare the character type variables and methods. It is capable of holding the unsigned 16-bit Unicode characters. Characters में हम पूरे यूनिवर्सल जितने भी कैरेक्टर्स डिक्लेयर होते हैं वो स्टोर कर सकते हैं कैर। और कैर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं हो सकते, और नेगेटिव कैरेक्टर स्टोर नहीं हो सकते। और फोर्थ होता है बुलियन। बुलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही होता है स्टोर। This data type can store only two logical values, namely true or false, and उसका size 1 byte store करता है। Next, next, non-primitive में होता है classes। First, class user-defined data type which consists of data members and methods or functions wrapped together. क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसमें डेटा मेंबर्स और मेथड्स मतलब सी और सी प्लस प्लस में जिसको हम फंक्शंस बोलते थे, दोनों को कंबाइन करके क्लास बनता है। और क्लास दिस मेथड कैन ओनली एक्सेस द डेटा, हेंस डेटा इज। तो क्लास में सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो क्लास में डेटा जो होता है वो सिक्योर्ड होता है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड होता है एरेज। एरेज तो हमें पता ही है कि उसका साइज डिक्लेयर होता है और उसको ARR से डिफाइन करते हैं, और वो होमोजेनियस डेटा स्टोर होता है। उसमें जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होता है वो सेम होता है, लिस्ट ऑफ जो नंबर्स होता है वो सेम होता है, एंड इट इज डिराइव्ड डेटा टाइप। एग्जांपल, और एरेज में 2D भी होता है और 3D भी होता है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। Third, interfaces. An interface can have methods and variables as in class, but the methods declared in an interface are by default abstract. Only method signature, no body. It is blueprint of the class. Interface जो होता है वो क्लास की तरह होता है, पर उसमें सिर्फ मेथड्स डिक्लेयर कर, बॉडी कुछ भी नहीं रहती है, वो क्लास का ब्लूप्रिंट भी कहलाता है। नेक्स्ट,
Today's my topic is Java Virtual Machine, JVM. Next. Ronak. Okay. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बेटा, लैग होता है ना तो तुमको डिस्प्ले होने में थोड़ा सा वक्त लगता है. रौनक, क्लिक ऑन एनेबल एडिटिंग, देन यू कैन डू द स्क्रीन शेयर. Now what is JVM? Ma'am, shall I start? Yeah, start. Now basically what is JVM? JVM stands for Java Virtual Machine. JVM is a virtual machine that resides in the real machine. Here real machine is your computer and the machine language for JVM is bytecode. Java virtual machine सिर्फ bytecode समझता है. This makes it easier for compiler as it has to generate bytecode for JVM rather than different machine code for each type of machine. जैसे कि C लैंग्वेज, C और C++ में हमारा कंपाइलर कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. यहाँ पे जावा अपने कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. JVM executes the bytecode generated by compiler and produce output. Next. अभी यहाँ पे इस डायग्राम में हमें पता चलता है कि जावा में जब प्रोग्राम मतलब या फिर कोड लिखते हैं तो जावा कंपाइलर उस कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है या फिर ट्रांसलेट करता है. तो यहाँ पे जावा बाइट कोड क्या होता है? जावा बाइट कोड बेसिकली कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कोड होता है जावा प्रोग्राम का, और जब वो एग्जीक्यूट होता है तो JVM थ्रू हमें उसका आउटपुट मिलता है. नेक्स्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है helloworld.java. आफ्टर कंपाइलेशन उसका एक न्यू फाइल बनता है helloworld.class. ये क्लास अपना है और इसी कारण डिफरेंट मशीन्स में बिना मशीन कोड चेंज किए हम डिफरेंट मशीन में अपना प्रोग्राम का आउटपुट ले सकते हैं, जिसके कारण अपना कंपाइलेशन स्पीड फास्ट हो जाता है और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है. थैंक यू. Akshay Udakar, and my topic is operator. Next. Definition of operator is, in Java, is a special symbol performing specific operation on 1, 2 or 3 operands and then returning a result. Java में operator एक special symbol देता है जिससे ये operation, जिससे यहाँ पे 1, 2 या 3 ऑपरेंड किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन में परफॉर्म कर सके, रिटर्न कर सके, रिजल्ट रिटर्न कर सके. नेक्स्ट. ऑपरेटर्स 8 टाइप के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर. नेक्स्ट. First is arithmetic operator. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operation on variables and data. For example, a plus b. Here, the plus operator is used to add two variables a and b. Arithmetic operator use होता है arithmetic operation को perform करने के लिए, जैसे कि a plus b. यहाँ पे plus operator use हुआ है दो वेरिएबल को ऐड करने के लिए. नेक्स्ट. Assignment operator. Assignment operator used in Java to assign values to variables. For example, int age. Age equals to 5. Here, equals is the assignment operator. It assigns the values on its right to the variables on its left. असाइनमेंट ऑपरेटर जावा, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे वैल्यू को असाइन करने में हेल्प करता है, जैसे कि एज को एज इक्वल्स टू 5, यहाँ इक्वल्स टू असाइन कर रहा है ऑपरेटर को
it assigns the value on its right to the variable on its left. Next, logical operator. A logical operator, sometimes called a Boolean operator in Java programming, is an operator that returns a Boolean result that's based on the Boolean result of one or two other expression. लॉजिकल ऑपरेटर को हम कभी कभी बुलियन ऑपरेटर भी कहते हैं। जावा प्रोग्रामिंग में यहाँ पे ऑपरेटर्स रिटर्न करता है बुलियन रिजल्ट्स को जो बेस्ड होता है बुलियन के रिजल्ट पर। बुलियन यहाँ पे एक और दो एक्सप्रेशंस देता है। बुलियन परफॉर्म करता है ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को। नेक्स्ट, relational operator. Relational operator in Java are used to comparing two variables for equality, non-equality, greater than, less than, etc. Java relational operator always return a boolean value, true or false. रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एक्सेट्रा। यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी यूज होती है ट्रू और फॉल्स की। Next, conditional operator. Conditional operator is also known as the ternary operator. This operator consists of three operands and is used to evaluate Boolean expression. The goal of the operator is to decide which value should be assigned to the variable. कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर के भी नाम से जाना जाता है। इसको ऑपरेटर कंसिस्ट होता है यहाँ पे थ्री ऑपरेंड्स में, और यहाँ पे भी बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो सकता है। नेक्स्ट, bitwise operator. Bitwise operator are used to perform manipulation of individual bits of the number. They can be used with any of the integral types, char, short, int, etc. Bitwise operator यूज होता है यहाँ पे कोई भी नंबर को मैनिपुलेट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे यूज होता है इंटीग्रल टाइप्स, जैसे कि कैर, शॉर्ट, आईएनटी एक्सेट्रा टाइप के इंटीग्रल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. Increment plus plus and decrement minus minus operator in Java programming let you easily add 1 to or subtract 1 from a variable. For example, using increment operator, you can add 1 to the variable name like this, a plus plus. An expression that uses an increment or decrement operator is a statement itself. इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस यानी ऐड करना, डिक्रीमेंट यानी माइनस माइनस ऑपरेटर यानी माइनस करना। यहाँ पे हम जैसे देखेंगे कि अगर वन लिया ऐड, अगर हमने ऐड किया एक नंबर को और सब्सट्रैक्ट किया वेरिएबल को, तो ऐसे कि एक एग्जांपल देखेंगे हम कि a प्लस प्लस लिया यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, a माइनस माइनस लिया यानी यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट, special operator. Operator in Java is a symbol which is used to perform operation. For example, plus, minus, multiply, divide, etc. There are many types of operator in Java which are given below: ternary operator and assignment operator. स्पेशल ऑपरेटर्स में यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा। यहाँ पे जावा में यहाँ पे 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे बेसिकली जाना जाता है। सॉरी, नेक्स्ट, थैंक यू। Good, Sakshi. Thank you, ma'am. Next is Pranoti. Good morning. My name is Pranoti Rokde and my topic is operators in Java. Next,
So Java divides the operator into following groups. First is arithmetic operators, second is assignment operators, third is comparison operator, fourth is logical operators and bitwise operators. Next, arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform common mathematical operations. For example, addition. Here, for example, 10 plus 2. Here, plus is an addition operator. Subtraction. It is used to subtract one value from another. Multiplication. It is used to multiply two values. Division. It divides one value by another. Modulus. It is used to return the division's remainder. Increment. It is used to increase the value by 1, and decrement. It is used to decrease the value by 1. Next, assignment operator. Assignment operator are used to assign value to variables. In the example, we use the assignment operator equal to assign value 10 to a variable called x. For example, int x equals to 10. Here, equal to is an assignment operator. Next, comparison operator. Comparison operator can be used to compare two values. For example, equal to x equal to y, not equal to x is not equal to y, greater than x is greater than y, less than x is less than y, greater than or equal to x is greater than or equal to y, less than or equal to. Here x is less than or equal to y. Next, logical operator. It is used to determine the logic between variables and values. Logical AND returns true. It returns true if both statements are true. Logical OR. It returns true if one of the statement is true. Logical NOT. It reverses the result. Returns false if the value is true. Thank you. Tokens are smallest individual unit in a program. The compiler recognizes them for building up expressions and statements. Tokens are useful for compiler to detect error. Next. Now we will focus on this code. In this code, public, class, demo, braces, static, void, main, parenthesis, string, brackets, argument, system, out, println, Java point, etc. are the Java tokens. Next. Java language includes 5 types of tokens. They are keywords, identifiers, literals, operators, punctuators. Next. Keywords are known as reserved words. Keywords are particular words which acts as a key to a code. Identifiers. Identifiers are programmer designed token. They are used for naming classes, methods, variable, object, labels, packages, and interfaces in a program. Java identifiers follow some rule. Rule number 1, they can have alphabets, digit and underscore and $sign characters. Number 2, they must not begin with a digit. Number 3, upper and lowercase letter are distinct. Number 4, they can be of any length. Next. Next. Literals.
Literals, next. Literals in Java are sequence of characters, digit, letter, and other character that represent constant value to be stored in variable. Java language specifies 5 major types of literals. They are integer literals, floating point literals, character literals, string literals, and Boolean literals. Operators. Operator is a symbol that takes one or more arguments and operates on them to produce a result. Punctuators or separators. Punctuators are symbol to indicate which group of codes are divided and arranged. They are basically define the shape and function of the code. Punctuators are parenthesis, braces, bracket, semicolon, comma, period. Thank you. Good, Janvi. Thank you, ma'am. Riya, mute yourself if you are not presenting. Hello, ma'am. Hello. My name is Ria and my topic is tokens. Tokens are individual element of programming language. To understand the concept of token, we can say that token as info means K for keyword, I for identifiers, L for literals, P for punctuation, and O for operator. Next, keywords. Keywords are reserved words that are specific to programming language like integer, float, character, double, if, while, do, etc. Identifiers. Identifiers are the names given to any function or class or variable or underscore. There are some rules for naming identifiers. First, the first letter by identifier must start with alphabet or underscore. Second, should be no special symbols except an underscore. There should not be any special identifier name. 4. Keywords can't be used as identifier name. 5. Upper class and lower class identifier are different. Third, literals. Literals are 5 types के होते हैं वो integer literal number without any decimal or decimal part. Second is floating point literal, also called as real literal. They are number which have part. Third, Boolean literal has only two, true or false. Character literal. One single character enclosed in और fifth है string literal. String literal have multiple characters and include in double quotes. Punctuators. Punctuators, also called as aspectors, used to inform to compiler how things are grouped in the code. Operators symbols that specified an evaluation to be performed on some data called operands. Operator can be arithmetic, relational, Boolean, bitwise, etc. Thank you.
Good, Ria. Thank you, ma'am. I'm experiencing very nice explanations from you people, and simultaneously I'm very happy कि with so less amount of time given to you, yet you have prepared so well. It's Akshita Banga right now. Good morning, ma'am. My name is Akshata and my topic is data member. Data members. We know that a collection is we know that a class is a collection of data members and methods. In Java programming, we have two types of data members. They are instance data member and static data members. Instance data members. Instance data members are those whose memory space is created each and every time whenever an object is created. Instance data member are always meant for storing specific values. Programmatically, instance data members declaration should not be preceded by a keyword static. Syntax data types v1, v2, v3, vn. Next, each and every instance data member must be accessed with respect to object name. Example, object name dot instance data member name. Instance data member are also known as object level data members because they depend on object name and independent from class. Example, int pin, int stno, string s name. Then static data member. Static data member are those whose memory space is created only once whenever the class is loaded in the main memory, irrespective of no object one are created. Static data members are meant from storing common value. Programmatically, static data members declaration must be preceded static keywords. Each and every static data member must be accessed with respect to a class name. Example, class name dot static data member name. Static data member name are also known as class level data member because they depend on class name and independent from object name. And for note, each and every final variable values must be a static, but a static variable value may or may not be a final. For example, static final float pi equals to 3.1417. Thank you. Good, Akshata. Good morning, everyone. My name is Pratik Rodi and my topic is data members. Data members may be private or public, but are usually held private so that values may only be changed at the discretion of the class function members. Data members includes members that are declared with any of the fundamental types as well as other types, including pointer, references, array types, byte fields, and user-defined types. For example, a member can be declared that is a pointer to an incomplete class types. Next. The types of data members.
The first type is instance data members. Whenever an object is created, the memory space is created each and every time. Instance data members are storing specific values. Programmatically, keyword static should not precede declaration of instance data members. The syntax is data types v1, v2, v3, and up to vn. Each and every instance data member must be accessed with respective object name. For example, object name dot instance data member name. Instance data member are also known as object level data members because they depend on object name and independent from class name. Example, int pin, int estino, string s name. Next. The second is static data member. Memory space is created only once whenever the class is loaded in the main memory, irrespective of number of objects are created. Static data members storing common values. Programmatically, static keyword preceded declaration of static data members. The syntax is static data type v1, v2, v3, and up to vn. Each and every static data member must be accessed with respective class name. Example, class name dot static data member name. Static data member are also known as class level data member because they depend on class name and independent from object name. For example, static string cname, static string cap India. Next, naming variables. Variable names are case sensitive. A variable's name can be any legal identifier. Subsequent characters may be letters, digits, dollar signs, and underscore characters. If the name you choose consists of only one word, spell that word in all lowercase letters. If it consists of more than one word, capitalize the first letter of each subsequent word. Next. The class members. The components of a class, such as its instance variable or methods, are called the member of a class or class members. A class member is declared with an access modifier to specify how it is accessed by the other classes in Java. Thank you. Good, Pratik. Yes, Akshar. Thank you, ma'am. It's almost up. So We can continue with one or two more students. Then we'll rejoin at our next class time. We can have one or two more presentations. Good morning, everyone. So my name is Triveni Manigam, and the topic that I have took is class. Class, it is an user-defined data type which consists of data members and methods. Methods are nothing but the functions. Class is a template of an object. For declaration of a class, following is the syntax of the syntax for declaration of class. First, we have to write the class, then class name. Class is the keyword. Class name is the name of the class. Next. In a previous slide, we have the variable declaration where the type is the data type of the variable, and here the type in method declaration, the type is the written type of the
Written type. Method name is the name of the method. Parameter list is the list of the parameters that are passed to the method. Next. Following is the example of the class. Here class rectangle is created, int length, int breadth, and a method get data is given. Length equals to 8, breadth equals to 9. Then void display system.out.println area of rectangle equals to plus length into breadth. Next. For creating an object, the following is the syntax, that is class name, object name equals to new class name constructor, where class name is the class whose object we want to create. Object name is the name of the object which we want to create. New is the operator which dynamically allocates the memory for an object at runtime. Class name is a constructor of a class. Following is the example using the object, that is rectangle, rect equals to new rectangle constructor. Next. Using class members. Class members can be referred using the dot operator. The data members can be accessed using the following syntax. Syntax is class name dot variable name. Example, rect dot length, rect dot breadth. Method inside the class can be accessed using the following syntax. Syntax is class name dot method name. Example using this syntax. Next. Following program, whatever we have discussed further, it is all about it. Program to calculate the area of rectangle. Thank you. Next.